या तो चलो चालू करते हैं। तो इससे लगभग 950 स्टॉक्स फिल्टर आउट हुए थे। तो अपन एक एक को देखते हैं। दिस इज मतलब ये जो ट्रेडिंग व्यू का जो फीचर है स्कैनिंग वाला, इट इज क्वाइट गुड, क्योंकि एक साथ वी कैन स्कैन अ लॉट ऑफ स्टॉक्स एंड मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि कोई ऐसा स्टॉक है या नहीं दैट वी कैन पोटेंशियली टेक एन एंट्री। तो आई पी एल आई सी आई एच सी एल टेक, आईटी वाले स्टॉक्स में मेनली यहाँ पे थोड़ी टाइटनेस थी, सब में है। बट दिस इज नॉट रियली अ काइंड ऑफ सेटअप जो मैं ट्रेड करता हूँ। आई लाइक कि थोड़े और मतलब एक अच्छा सा बेस बने एंड देन आई लाइक टू ट्रेड देन। ओ एन जी सी भी जस्ट रिकवरी है यहाँ पे। सन फार्मा, एन टी पी सी, टाटा मोटर्स, अडानी एंटरप्राइजेस में मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती है, वो मैं बताता हूँ। See, Adani Enterprises is making a kind of BCP here. अगर अपन डाउन साइड जिसकी देखें तो पहली डाउन साइड वॉज 13 पॉइंट समथिंग परसेंट, दूसरी डाउन साइड वॉज 8%, थर्ड डाउन साइड वॉज 7%। तो दिस इज अ 3T VCP स्ट्रक्चर। तो वी कैन वेट फॉर अ ब्रेकआउट, यहाँ पे एक लेवल वी कैन मार्क, है ना। एंड नॉट दिस वन, ओके दिस वन। हाँ, तो ये लेवल वी कैन मार्क एंड उसके ऊपर अगर ये जाता है तो वी कैन हैव अ लुक एट इट। तो वॉच लिस्ट में ऐड कर देते हैं। देन एम एन एम डाउन ट्रेंडिंग ही है। अडानी पोर्ट्स कुछ इतना खास है नहीं। कोल कोल इंडिया इज लुकिंग गुड, वन सेकेंड। ओके, कोल इंडिया इज गुड क्योंकि यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये जो यहाँ पे दो इनसाइड कैंडल्स हैं, दिस इज अ गुड थिंग। दो दो इनसाइड कैंडल्स हैं, मतलब एक अच्छा सा कप एंड हैंडल टाइप। मतलब इस डेली टाइम फ्रेम पे तो नहीं बोल सकते कप एंड हैंडल, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो वी कैन सी कि थोड़ा उस उस टाइप का सिमिलर स्ट्रक्चर बना रहे, है ना। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जो वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे, दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो दीज आर accumulating वॉल्यूम्स एंड कंपेरेटिवली अगर अपन रेड वॉल्यूम्स को देखें तो वो इतनी ज़्यादा है नहीं, right? So this is a very good indication of accumulation happening. So we can look for this one as well. So इसको भी अपन ऐड कर लेते हैं। Then Ultratech, nothing much. DMart, DMart मैं एक्चुअली ऐड करने की सोच रहा था, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेस था। दिस वन, वन, टू एंड थ्री, काफी अच्छे से टाइट भी हुआ था ये यहाँ पे, बट इट डिडंट ब्रेक आउट। अभी बना रहे हैं इनसाइड कैंडल्स, बट ये वाला स्ट्रक्चर मेरे को बहुत अच्छा लगा था एंड वो उसको इसने वॉइड कर दिया अभी को भी। ऑल्सो वॉल्यूम्स भी कुछ खास है नहीं यहाँ पे, तो उसकी वजह से आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस वन। लेकिन ठीक है, कोई अगर पोजिशनल में देखना चाहे तो थोड़े फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। बाकी इट कैन बी अ गुड पिक। एक बहुत ही बड़ा बेस है। देन पावर ग्रिड कुछ इतना खास नहीं है, अडानी ग्रीन भी डाउन ट्रेंडिंग है। बजाज ऑटो सीम्स गुड। या बजाज ऑटो इज ऑल्सो गुड। इसमें भी वही सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन वाला स्ट्रक्चर है। पहली डाउन साइड 7.5% की, then the next one is 4.8%, and यहाँ पे I think this will be an inside candle. So yes, this is a very good structure। मतलब these are the kind of structures I like to trade, कि एक base बना, then the second one, then the third one, and then I mark a level here somewhere, है ना। एंड as soon as it breaks out I like to enter, क्योंकि यहाँ पे अपना एसएल भी काफी कम रहेगा इस कैंडल के लो पे, अराउंड बहुत ही अग्रेसिव एसएल लेना है तो 1.5%, और थोड़ा नीचे जाना है तो यू कैन लुक फॉर 3 or 4%। एंड अपसाइड इज क्वाइट गुड एक्चुअली। मतलब 1 आवर ट्रेड तो ये ऑल टाइम हाई पे ही हो जाएगी, तो दिस इज अ गुड सेटअप। बस दिक्कत ये रहती है कि ये लार्ज कैप्स में ना मूव्स आर अ लिटिल बिट डाइसी, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी होती है
कि for every up move there are sellers, लेकिन this has a very good move, linearity बहुत अच्छी है यहाँ पे, not many retracements है. So yeah, the this structure looks pretty good. नेक्स्ट जोमेटो में तो एंट्री आई. लेट्स सी, वैसे मोस्ट प्रोबेबली तो ऐसे हिट करेगा, बट देखते हैं. IRFC डाउन ट्रेंडिंग है, ट्रेंड भाग चुका है. BEL भी डाउन ट्रेंडिंग है. SBI लाइफ में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है नहीं. REC में कुछ नहीं है. HDFC लाइफ में ठीक है, मतलब इट्स नाइस ट्रेंडिंग, लेकिन एज मच मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, सच कुछ दिख नहीं रहा है. We can draw a zone here. We can. I'd like to get. I'd like it to get more tighter. क्योंकि अभी भी there's no definitive entry point, right? Yeah. Then Gale is nothing much. Tech IT का वही सीन है कि पिछले एक डेढ़ हफ्ते में this was tight here and breakout दिया था, लेकिन gap down होके they were tight, तो उसका कोई सेंस नहीं. PPCL. ओके. आयुष्मान. Zydus कुछ नहीं. दिवस लैब देख सकते हैं. दिवस लैब. नॉट दैट ग्रेट. नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि एक तो ये वॉल्यूम ज़्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड भी है ये, है ना. प्लस दिस इज नॉट really the kind of structure you want to trade. Not really the structure I would like to trade. Motherson भी डाउन ट्रेंडिंग है. सिप्ला. let's see. Sipla, नहीं, I wouldn't read this. I would have liked it, मतलब अगर इसने एक higher low बनाया होता यहाँ पे, it just came back to the same level and बस उसने वहीं से ही bounce back करा है. तो I would like the higher low here. सिप्ला यहाँ पे भी आसपास I shared, but वो तो इसने it wasn't able to move up, but yeah, not this time too. JSW isn't good. TVS Motor is decent. Yeah, TVS Motor is good. So TVS Motor, Bajaj Auto, I think two wheelers वाले you can have a look at the, मतलब सेक्टर में देख सकते हैं थोड़ा. TVS Motor ये ट्रेंड लाइन भी है. हाँ, yeah, it looks good. Kind of inside candle भी है. Volumes, just look at the volumes. ये जो तीन candles हैं यहाँ पे, look at these volumes. तो बिल्कुल ही टाइट रेंज है यहाँ पे, and volumes aren't much as well. So that is a good sign as well. So TVS Motor can be something to track. टाटा कंज्यूमर नथिंग मच. डॉक्टर रेडी ये थोड़ा अब ट्रेंडिंग चैनल है. आई डोंट ट्रेड दिस. टोरेंट फार्मा नथिंग मच. श्रीराम फाइनेंस. श्रीराम फाइनेंस में यार सीन ये है, आई टेकन अ ट्रेड इन दिस पहले, लेकिन ये अजीब सा स्टॉक है, पता नहीं, देयर आर नो गुड मूवमेंट्स. स्ट्रक्चर ठीक है, स्ट्रक्चर इज वेरी गुड, लेकिन इस स्टॉक में एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि ये रिट्रेस बहुत ज़्यादा करता है. मतलब यू सी, ये मूव है, देन इट क्विकली रिट्रेसेस, पूरा का पूरा रिट्रेस कर देता है. ये मूव आया, क्विकली रिट्रेस करा, ये मूव आया, फिर रिट्रेस, मूव, रिट्रेस, है ना. देयर इज नॉट मच वो, मतलब कहते हैं ना कि एक साइडेड मूव नहीं आता है इसमें फॉर स्विंग ट्रेडर्स टू कैप्चर एनीथिंग. यहाँ पे भी इट गेव अ गुड इनफ सेटअप, लेकिन वो भी इसने फेल करा. तो वो, मतलब एक अच्छा बिहेवियर नहीं है इसके चार्ट का. दैट्स आई डोंट लाइक इट. बाकी ठीक है, स्ट्रक्चर इज गुड. इफ यू वांट टू प्ले विद इट, कैन हैव अ लुक. आइडिया डाउन ट्रेंडिंग है. CG पावर इज नथिंग मच. RVNL भी डाउन ट्रेंडिंग टाइप ही है. ICICI United, IDBI, Bajaj Holding, GMR Infra. Oil was a good setup.
ऑयल आई डोंट नो आई शेयर्ड इन द ग्रुप और नॉट, मैं तो ट्रेड नहीं कर पाया, लेकिन दिस वाज अ ब्यूटीफुल एक यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बेस बनाया है इसने। दिस इज वन, दिस इज टू। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाई है इसने ना। इनसाइड कैंडल के ऊपर देयर वाज एन इजी एंट्री, छोटा सा 3.5% का एसएल एंड ब्यूटीफुल अपसाइड ना। एंड मतलब these kind of setups are very easy to trade, मतलब just look at these volumes here, just compare these green volumes to the red ones, अपने आप समझ आ जाएगा कि people are accumulating it or not ना। जस्ट कंपेयर ये जो वॉल्यूम बार्स हैं और ये जो रेड वॉल्यूम बार्स हैं, ठीक है, इट सिंपली शोज कि सप्लाई इतनी है ही नहीं स्टॉक की, है ना। डिमांड इज गुड क्योंकि अब ट्रेंड में है तो ऑफ कोर्स डिमांड इज गुड, लेकिन जब ये कंसोलिडेट कर रहा है तो सप्लाई इतनी है ही नहीं स्टॉक में। तो ऑफ कोर्स जब भी एक छोटा सा भी स्पार्क आएगा तो देयर विल बी अ गुड इनफ लीड। सो ऑयल वाज अ गुड वन ना। सुसलॉन पता नहीं क्यों पागल हो गया है। कमिंस इज नॉट दैट ग्रेट। पॉलीकैब, मैजडॉक, मैजडॉक इज ओकेश, मतलब चैनल टाइप ही पैटर्न है। मैं तो आई डोंट ट्रेड दिस, पर ठीक है, if somebody wants to trade, yeah, decent one, not that bad, देख सकते हैं, at least we can try it. Then ICICI, Lupin, अपोलो, अपोलो हॉस्पिटल ने ब्रेकआउट नहीं दिया, इट वाज अ गुड सेटअप यार, मैंने जीटीटी वगैरह भी लगाया था। हाँ, इट वाज अ वेरी गुड सेटअप है, लेकिन दिस कैंडल जस्ट ruined everything, so yeah. टोलपाल, नौकरी, ओएफएस, HDFC AMC, let's have a look. HDFC AMC is decent, मतलब not that great as well. I don't like the volumes here. यहाँ पे एक resistance है and trend is also decent, but ठीक है ना, वो due to these volumes not really sure. Indian Hotels, Foreign Power, Oro Pharma, Marico, Petro, Muthoot Finance. See, this is the example of these trending channels. This is a great example. मैं तो ट्रेड नहीं करता, but I've seen many people trade this, and yeah, it's a good setup. मतलब this is a near perfect channel. Buy पे मतलब low पे buy करो and you can book there. तो बहुत सारे retracements आते हैं इसमें, and these are all, कभी कभी the stock breaks out as well and it gives a nice move. तो yeah, मजबूत का। और अगर एक चीज देखनी हो ना तो आई टेल यू वन थिंग, चैनल पैटर्न्स में हमेशा एक चीज ऑब्जर्व करना, कि जो प्राइस है वो लोअर ट्रेंड लाइन के ज्यादा पास रहती है या फिर अपर ट्रेंड लाइन के। जैसे लुक एट दिस, यहाँ पे इट इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द अपर ट्रेंड लाइन, है ना। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस, है ना। और लोअर ट्रेंड लाइन पे आते ही क्या होता है, लोअर ट्रेंड लाइन पे ये आई, तुरंत इसको बाय करके ऊपर भेजा, आई, तुरंत इसको बाय करके वापस भेजा, फिर आई, फिर तुरंत बाय करा, फिर आई, फिर तुरंत बाय करा। तो इसका मतलब क्या है कि लोअर ट्रेंड लाइन पे मेनी पीपल आर सिटिंग टू बाय, है ना। अपर ट्रेंड लाइन पे सेलर्स को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है इसको धकेलने के लिए। लोअर ट्रेंड लाइन पे बायर्स बैठे हुए हैं कि आया लो ऊपर डाल दिया, आया ऊपर डाल दिया। सो दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेशन कि अच्छी खासी डिमांड है ना। तो दीज आर दीज लिटिल थिंग्स दैट कैन हेल्प यू इन एलोकेशन। Muthoot, Ashok Leyland, let's see. अशोक लीलैंड और टाइट होगा तो I'll have a look, बाकी ठीक है, सेटअप इज क्वाइट गुड, अब ट्रेंड में है। एक गैप अप टाइप भी है यहाँ पे, ये अनफिल्ड गैप है, सो दैट्स गुड एज वेल। अशोक लीलैंड इज गुड। Persistent, Alkem I shared, we missed it. Alkem was a great setup. This trend line here, and Alkem was a great setup, मतलब वही है जो बेस की बात मैं करता हूँ,
यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का बनाया, देन इट गॉट टाइट हेयर, है ना। एंट्री इज इजीली अबव दिस बेस, यहाँ पे एक एसएल लगा लो, 3-4% का एसएल है अप्रोक्सीमेटली, एंड गुड इनफ अपसाइड। तो या वी मिस दिस वन यार, ये बहुत ही अच्छा सेटअप था, और मतलब हाइस पे था एकदम। यहाँ से भी एक यू कैन ड्रॉ ट्रेंड लाइन इफ यू वांट ना। ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट है ट्रेड करना चाहो तो। या दिस वाज अ फैंटास्टिक वन। प्रेस्टीज, पीआईसी, पॉलिसी बाजार, nothing much. USW Infra is down trending. Uber और रियल्टी में कुछ नहीं है। Fortune ship भी नासो इसका सेम ही पैटर्न है, think। या बस ये थोड़ा स्टीप ज़्यादा है, नथिंग मच। और ये तो रिवर्सल ही दे चुका है, मतलब दिस वुड बी ना रिवर्सल सेटअप। अगर मैं चार्ट यहाँ पे इन्वर्ट कर दूँ तो वी कैन सी कि दिस इज अ गुड इनफ रिवर्सल सेटअप, राइट। वो थ्री टच वाला जो होता है, तो इट्स अ नाइस रिवर्सल सेटअप एक्चुअली। Fact, nothing much here. MRF, Kalyang Jewelers, not that great। थोड़ा यहाँ पे अगर और टाइटनेस आए तो देन मे बी आई लाइक इट, बट नहीं ज़्यादा अभी अभी। फॉर नाउ नथिंग मच। पेट्रोनेट भी अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा तो इट मेक सेंस। एम्फेसिस, Glaxo, KPIT, Voltas could have gave a nice breakout today। वोल्टास ने इस रेंज से अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। यू कैन मेक लाइक अ डावर्स बॉक्स है, एंड दिस वाज अ गुड ब्रेकआउट, वेरी गुड ब्रेकआउट। वॉल्यूम्स बहुत ही अच्छे हैं। नॉट श्योर अर्निंग्स थी या क्या था, बट दिस गैप एंड क्लोजिंग सच स्ट्रांगली, इट्स अ ग्रेट इंडिकेशन। पता नहीं अर्निंग्स बाद में है या आ चुकी है, नॉट श्योर। GETND, GETND इफ यू रिमेम्बर हाईटाइट फ्लैग वाले में मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे शेयर करा था कि हाउ इज इट, हाउ इट इज रिस्पेक्टिंग द 10 EMA। मैं बता देता हूँ। 10 नहीं, आई थिंक कौन सी EMA थी, 50 EMA थी। 50 EMA थी। वी डिस्कस कि यहाँ पे कितनी बार इट हैज बीन रिस्पेक्टिंग दिस EMA, राइट। तो आई शेयर्ड इट एग्जैक्टली हियर, और बहुत ही अच्छा मूव दिया इसने। अगेन इट इज सेटिंग अप। वी कैन सी कि ये एक बेस बना है इसने, देन द सेकंड वन, एंड देन नाउ इट्स टाइम टू मेक द थर्ड वन। सो गुड, गुड सेटअप। ये हाई लोज भी बना रहा है, वॉल्यूम्स आर गुड एज वेल, दीज वॉल्यूम्स आर गुड, है ना। तो या इट्स समथिंग यू कैन ट्राई। बस एक प्रॉब्लम है ये सर्किट्स वाली, तो उसको देखना पड़ेगा थोड़ा, बाकी तो इट्स गुड। डीएम इंडिया, दीपक, ग्लेनमार्क, ग्लेनमार्क मिस हो गया क्या मुझे? ओके, ग्लेनमार्क भी मिस हो गया। ग्लेनमार्क अगेन वही चीज, एक बेस बनाया यहाँ पे, इनसाइड कैंडल टाइट थी, the volumes are really drying up here, and we see a good breakout। Okay, Lloyd's looks good। This looks nice। Just look at this, मतलब ये जो volume pillars हैं, these mean accumulation, we can see कि उसके बाद red volumes में तो बिल्कुल भी दम नहीं है। And then again that, just count the downside। और VCP में अपन को बस डाउनसाइड से मतलब रखना है। तो दिस इज 14%, दिस इज 11%, एक इनसाइड कैंडल है आज। तो वी कैन सी, अभी राइट सेटअप तो नहीं कह सकता मैं इसको, लेकिन ठीक है। आज समथिंग टू बी केप्ट इन वॉच लिस्ट। ट्रेंड भी आई थिंक गुड ही होगा, इतना ही चार्ट है। ओके, ट्रेंड इतना कोई खास नहीं है।
देखते हैं। जुबिलेंट फूड शॉट अप, कोफॉर्ज में वही सीन। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज अगर कोई ट्रेड करता हो तो ये वाले सेटअप्स देन इट्स गुड। अदरवाइज मेरे लिए तो इट्स नॉट दैट ग्रेट, वॉल्यूम्स भी ज़्यादा कोई खास है नहीं, बहुत ही सडन डाउन साइड है ये। यहाँ पे गैप वाली डाउन साइड है तो नॉट समथिंग दैट आई लुक फॉर। 61 फ्लोरोकेम, फ्लोरोकेम का ट्रेंड कैसा? नॉट दैट ग्रेट। दिस लुक्स गुड, लेकिन ट्रेंड इतना अच्छा नहीं है। आई अवॉइड। और दिस मेट्रो ब्रांड्स वही वापस टारगस ऑफ सेटअप। वही टारगस बॉक्स सेटअप है, लेकिन there's one इशू हियर, विक्स बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा विक्स है। तो this might be a very big supply zone, so that's something to be concerned about. मोतीलाल ओएफएस, इसने भी काटा था बुरा वाला यहाँ पे। वी ट्रेडेड एयर एंड बहुत ही बुरी कॉल थी। एंड्योरेंस सन टीवी फेल डाउन। ओके, बीएसई लुक्स गुड। या बीएसई लुक्स गुड, थोड़ी शॉर्ट टर्म डाउनसाइड है, बट व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट टू मी इज दैट ये गैप इसने फिल नहीं करा। इफ यू लुक एट दीज थ्री कैंडल्स, ये जो गैप अप था, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो वॉल्यूम्स देखो, दिस दिस एंड ऑल्सो दिस, क्योंकि दिस वाज अ गैप अप तो रेड से तो फर्क नहीं पड़ता। एंड देन कंपेयर इट विद दीस, ठीक है, तो अगेन द सेम पॉइंट, अच्छा खासा एक्यूमुलेशन है यहाँ पे, है ना। सेकंड पॉइंट, दिस बेस, है ना, और यहाँ पे टाइट। थर्ड पॉइंट, ये गैप अप, है ना। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे ये टाइटनेस और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मतलब एंट्री समवॉट हेयर, तो 4% के अराउंड पे एस एल, 4.5% आई थिंक, एंड देयर इज अ गुड इनफ अपसाइड पोटेंशियल टू कवर। ग्रेट ग्रेट सेटअप। बीएसई वॉच लिस्ट में इमामी, आईपीसीए, सिंजीन, ग्लैंड, बीसीसी, टीवीएस होल्डिंग्स, टीवीएस एक्चुअली। ठीक है, वी कैन ऐड दिस इन वॉच लिस्ट। अभी तो इट वुड नॉट बी सूटेबल टू एंटर। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइट होता है एक दो दिन, देन इट्स अ गुड सेटअप, बिकॉज ट्रेंड इज क्वाइट गुड। एक तो ये होल्डिंग कंपनीज पे जब इतनी इमीडिएट अपसाइड आती है तो आई गेट वेरी वरीड यार, बिकॉज होल्डिंग कंपनीज में आनी नहीं चाहिए ऐसी अपसाइड। वी ऑल रिमेम्बर टाटा होल्डिंग्स, क्या हाल हुआ था उसका। टाटा होल्डिंग का क्या था? टाटा होल्डिंग नहीं था, क्या नाम था उसका? टाटा होल्डिंग ही था। नॉट श्योर, पता नहीं। मतलब उसमें भी यही सीन हुआ। अच्छा, टाटा इन्वेस्टमेंट्स था, राइट। हाँ, टाटा इन्वेस्टमेंट था। तो मतलब दिस इज वेरी यूफोरिक है। ये आई थिंक पता नहीं कुछ तो सीन हुआ था, टाटा केमिकल्स का कुछ लिस्ट हो रहा है एंड ऑल दैट, नॉट श्योर। तो हम्म, तो ये बहुत ही यूफोरिक यहाँ पे गया था, 9,500 एंड वन साइड डाउन साइड। तो जस्ट बी एक्स्ट्रा कॉशियस, जब भी होल्डिंग कंपनीज में ऐसी अपसाइड आए, बी वेरी कॉशियस।
क्योंकि होल्डिंग कंपनीज के पास बिजनेस थोड़ी होता है खुद का, दे आर जस्ट होल्डिंग सिक्योरिटीज। तो अनटिल एंड अनलेस उन अंडरलाइंग सिक्योरिटीज में कुछ अपसाइड है, इट डज नॉट मेक सेंस फॉर देम टू राइज अप, राइट? Crompton Games, Aarti Industries is good. Not मतलब डिसेंट सा है, इतना भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। नहीं, आई लाइक टू अवॉइड CDSL। CDSL structure is not something that I trade, लेकिन strength है चार्ट में, बहुत ज़्यादा strength है। I'll tell you why, क्योंकि if you make this box here, तो ये gap up and this gap up was sustained, है ना? फिर उसके बाद exactly the kind of candles I want, ये जो candles हैं, this one and this one, कि स्टॉक धीरे धीरे नीचे आता है एंड देन अ सडन अपसाइड, देन धीरे धीरे नीचे, यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आया एंड देन अ सडन अपसाइड। तो दिस इज इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट फॉर, क्योंकि वो ऐसे ही बाय करते हैं, दे पुश द बाय बटन एंड देन दे वेट फॉर इट टू कम डाउन, एंड देन दे अगेन पुश द बाय बटन एंड दे वेट फॉर इट टू कम डाउन, क्योंकि ऑफ कोर्स एक साथ तो वो एंट्री ले नहीं सकते, क्योंकि फिर तो उनकी एवरेज प्राइस ही बहुत ऊपर चली जाएगी। ये क्वांटिटी उनकी इतनी ज़्यादा होती है कि इफ दे बाय इन वन गो तो फिर तो पूरा रिस्क रिवॉर्ड ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल कुछ में इतना कुछ नहीं है, फाइजर है ये अपने पास। वर्लपूल, वर्लपूल में मेरा वो ट्रिगर ही नहीं हुआ था जीटी, पर ठीक है, आई गॉट लकी, क्योंकि ये तो ऐसे ही मार देता था। ठीक है, वर्लपूल नॉट समथिंग, वापस ही ऊपर आया है इस पे, तो देन मे बी यू कैन सी, बाकी और तो कुछ नहीं। चिलट भी सेम सही है। रत्ना मानी, नहीं, these volumes are concerning. Like Century is making inside candles, I think. Century Textiles था, I think. हम्म। हम्म, नहीं, नॉट रियली। इसमें जो मैं बता रहा था उसका उल्टा टाइप हो रहा है, कि सडन डाउन साइड, सडन डाउन साइड, सडन डाउन साइड। ठीक है, इट कैन गो अप, लेकिन नॉट समथिंग कि आई एम कंफर्टेबल विद। PPL Pharma, CSC we got today. CSC was a great setup. अगेन जो सेम थिंग मैं बता रहा था, BCP अगर डाउन साइड, एक तो ये है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कह सकते हैं, लेकिन अगर अपन इसकी डाउन साइड्स देखें तो 20%, 8%, 4%, तो बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे। वॉल्यूम्स अगर अपन देखें, वॉल्यूम्स पास में बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, एंड देन वी सी कि यहाँ पे ड्राइनेस है बहुत अच्छी। और आज गुड इनफ कैंडल, आज गुड इनफ कैंडल 179 पे एंटर टुडे, तो देखते हैं क्या। वी ऑल्सो ट्रेडेड हेयर आई थिंक, तो यहाँ पे आई एग्जिटेड इट अर्ली, बहुत अच्छा इसने और मूव किया था, तो आई मिस दिस वन, लेकिन लेट्स ट्राई कि देखते हैं यहाँ पे एक अच्छा मूव आता है। गॉट आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स विंड मैं, आई वाज ट्रैकिंग, आई वाजंट लुकिंग टू एंटर बट आई वाज ट्रैकिंग, क्योंकि दिस वाज अ गुड सेटअप। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, देन इट रिट्रेस, है ना, एंड यहाँ पे दीज आर रियली टाइट कैंडल्स, दिस वन एंड EMS, दीज वर ऑल मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सेटअप्स। EMS का भी सेम ही सीन था, कि ये जो कैंडल्स हैं, दीज थ्री वंस, दीज वंस, दीज आर रियली टाइट कैंडल्स। इसको अगर अपन लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो विल सी कि कितना अच्छा यहाँ पे बेस बना था, है ना, 1 2 3, दिस इनसाइड कैंडल, इजी एंट्री एंड अच्छा खासा मूव। तो EMS एंड दिस क्या नाम था, आइनॉक्स विंड, दिस वर गुड।
Walmart, Apple, CX, EPL, Swan, Cams, चंबल चंबल के साथ तो ये मतलब नॉट इतना रिश्ता नहीं है चंबल के साथ अच्छा. We traded it before and पूरे फर्टिलाइजर ने मूव दिया था, इसने ही नहीं दिया था. अजीब ही स्टॉक है, पर ठीक है, विल ट्रैक इट. अच्छा है. वी कैन सी अ कप एंड हैंडल टाइप एंड थोड़ा और टाइट हो जाए तो लेट्स सी. श्याम ने दिया ऑलरेडी एंटर. जिंदल स्टॉक. ओके, जिंदल सॉ इज गुड. We this was a good this was a good breakout, and then it's again setting up here. थोड़ा और टाइट हो तो then it's better. एक बार देख लेते. ओके, वी गार्ड, another one. Yes. बहुत ही अच्छा सेटअप था, बहुत ही अच्छा सेटअप. Now look at these three candles. Just look at this. ये three candles और उनके यहाँ पे volumes. Just look at this. these volumes यहाँ पे accumulate हो रहा है स्टॉक. जब टाइटनेस आई तो सप्लाई चली गई. ब्रेकआउट दिया आज और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग. लाजवाब से. PTCIL, PKG, NCC. NCC में ऐसे लिया था. NCC अच्छा सेटअप था यहाँ पे. डिडंट मूव. मे बी वो कुछ गैप डाउन हुआ था आई थिंक, उसकी वजह से. नॉट श्योर. बट ठीक है, यहाँ पे वापस टाइट कैंडल्स बना रहा है तो वी कैन ट्राई इट. these are short candidates. अगर मतलब देखें अपन अच्छे से तो these are good short candidates too, अगर ये ब्रेक डाउन करे. क्योंकि चार्ट में अगर इन्वर्ट करूं तो वी कैन सी कि गैप को सस्टेन कर रहा है, टाइट कैंडल्स बना रहा है, ब्रेकआउट दे सकता है यहाँ पे. these are good short candidates as well. APSL, ज्योति लैब. ओके, ज्योति लैब इज गुड एज वेल. कप एंड हैंडल तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया इसने, है ना. दिस इज द थिंग जो मैं कह रहा था कि दिस कैंडल एंड दिस कैंडल की इंस्टीट्यूशंस दे पंप. धीरे धीरे स्टॉक को नीचे आएंगे, देन दे पंप अगेन, देन ड्राइनेस आएगी एंड देन दे पंप. So that's how they enter a position. And you'll see a lot of continuation setups. तो ये एक अच्छा सेटअप था, ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे लेके आए, फिर पंप किया, फिर टाइट कैंडल्स बनाई, फिर पंप किया. So that's how they operate. ओके यार, ये तो और भी अच्छा सेटअप है. आई डिडंट सी दिस. दिस दिस तो वेरी गुड यार. थोड़ा लेट हो गए. एंट्री यहाँ पे अच्छी हो सकती थी, छोटा सा 2.5% का इससे. गुड अपसाइड. देखते हैं, अगर थोड़ा सेम लेवल्स पे ओपन होता है टुमारो तो लेट्स सी. कम एलोकेशन के साथ ही विल ट्राई. सिग्नेचर, एफएसएल, वोल्टाम, एच एफ सी एल मैंने पोस्ट भी करा था. आई जस्ट फाइंड दिस चार्ट. ओके, आज मूव अप भी करा. मतलब मेरे को तो बहुत ही अच्छा चार्ट लगता है. आई आई डोंट हैव अ स्ट्रक्चर टू ट्रेड दिस. क्योंकि आई डोंट नो, मैं यहाँ पे एंटर भी करूँगा तो भी एसएल कहाँ रखूँगा. तो दिस इज द रीजन वाई. लेकिन ब्यूटी सेटअप यार, मतलब लुक एट दीज वॉल्यूम्स, है ना. कंपेरेबल रेड वॉल्यूम्स कुछ है नहीं. और वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है. पंप करेंगे एक साथ, धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर पंप करेंगे, फिर एक स्पाइक, फिर एक स्पाइक. तो बहुत ही अच्छा ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्ट वो अप ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन टाइप है. इसको ये ब्रेकआउट देता है तो इट कैन बी अ गुड वन, है ना. ऑल्सो दैट कॉन्ट्रैक्शन पार्ट अगर अपन देखें, ये डाउन साइड को 22%, 12%,
देन ओनली दिस 7.6%, तो बहुत ही अच्छा सेटअप है यार। बट आई जस्ट डोंट नो कि यार मैं एसएल कहाँ रखूंगा इसमें। तो अगर ये या तो यहाँ पे थोड़ी हॉरिजॉन्टल कॉन्ट्रैक्ट मतलब टाइट कैंडल्स बनाए तो आई लुक फॉर एंट्री, बट लेट्स सी। और एचएफसीएल में आई थिंक कुछ फंडामेंटल कैटलिस्ट टाइप भी हैं, आई एम नॉट श्योर, मैंने आई सॉ ऑन एक्स, बट श्योर नहीं हूँ, आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू। Great Eastern Blue Dart I was checking, लेकिन ब्लू डार्ट पे सीन ये था कि दिस वाज द ट्रेंड लाइन, है ना, और यहाँ पे इट इज फेसिंग रेजिस्टेंस, है ना, एंड आई एम वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट। देखते हैं, आई एम नॉट सो श्योर कि मैं इसमें एंटर करूंगा या नहीं, क्योंकि आई डोंट लाइक द फैक्ट कि ये लोअर ट्रेंड लाइन पे टाइम बहुत स्पेंड कर रहा है, मतलब इट इज एब्जॉर्बिंग द डिमांड, है ना, कि सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो डिमांड एब्सॉर्ब करवा रहे हैं। तो दैट इज समथिंग आई डोंट लाइक। अनदर थिंग आई डोंट लाइक इज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड है, कैंडल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इतना कन्विक्शन नहीं आ रहा। लेट्स सी, ट्रैक तो कर ही सकते हैं डेफिनेटली। के फिनटेक शॉर्ट अप, एमजीएल लुक्स गुड, या एमजीएल लुक्स फैंटास्टिक है, एमजीएल लुक्स फैंटास्टिक। यहाँ पे वही काइंड ऑफ वही ईएमएस टाइप ऑफ सेटअप है, but if we make this kind of trend line here, so yeah, there's a lower time frame for this thing. Yeah, it looks great, yeah. Yeah, and skill sector का I think Petronet is also going up, है ना, एक अच्छा base type, and yeah, so MGL is something you can have a look at. Then Kirloskar, TCM, Zensar, Manapuram, Wellcorp broke out. Wellcorp was a good setup. वही यहाँ पे तीनों accumulation candles, टाइट, एकदम टाइट कंसोलिडेशन यहाँ पे, बिल्कुल ड्राइड वॉल्यूम्स, और अच्छी खासी अपसाइड वॉल्यूम्स, ग्रीन कैंडल्स, गुड सेटअप। करूर व्यासा ठीक है, डिसेंट है, बट आई डोंट लाइक दीज गैप डाउन्स है। ये गैप डाउन्स को ट्रेड करना आई डोंट रियली लाइक, ये बहुत ही वीकनेस दिखाता है। मतलब if you have a look at this downside, तो कैंडल जो है वो गैप डाउन भी दे रही है, देन नेगेटिव क्लोजिंग भी दे रही है, फिर गैप डाउन, फिर गैप डाउन, तो दिस इज वेरी कॉशियस थिंग, दिस इज वेरी मतलब बेकार थिंग है। ऑल्सो मतलब उल्टा बेस टाइप है ये, 1 2, एंड यहीं से ये टर्न टाइप ऑफ ले रहा है, तो नॉट अ रियली गुड चार्ट स्ट्रक्चर। क्लीन साइंस, क्लीन साइंस में विक्स बहुत है, मतलब इवन इफ यू ट्रेड हियर, तो अजीब ही चार्ट है ये, रेड वॉल्यूम्स हद से ज्यादा है, तो नहीं यार, नॉट समथिंग, ना कोई ट्रेंड अच्छा है। आपके फॉर्ज, एचपीएल पावर तो समथिंग आई आई हैव बीन ट्रैकिंग फॉर सो लॉन्ग, लेकिन मैं एंटर नहीं कर पाया किसी से, मतलब बहुत ही लो लेवल्स, मतलब डबल डिजिट लेवल्स से आई वाज ट्रैकिंग दिस, लेकिन आई जस्ट कंप्लीटली मिस दिस। ठीक है, काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, लोअर विक्स हैं, दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है, देख सकते हैं, नॉट दैट ग्रेट, इतना कोई कन्विक्शन नहीं है, बट ठीक है, देख सकते हैं। पीवीटीसी फाइन, ऑर्गेनिक्स, पीएलएस, एसपीएल पेट्रो वही सेम चीज, गैप डाउन और गैप डाउन के नीचे,
गैप डाउन के नीचे है यहाँ पर। तो ठीक है, anyone likes to trade these setups तो you can check it out, लेकिन not something I do. Sanofi, Sanofi is good. Circuits में move करता है ये। Candles are very small here. Circuits तो I don't see much. 5% है यहाँ पे है, पर lower circuits जितने नहीं। ठीक है, Sanofi we can track। यहाँ पे थोड़ा और टाइट हो तो this can be a good setup। रिस्क इतनी नहीं होगी इसमें। हाँ, if you enter somewhere around here तो रिस्क काफी कम होगी, 3.8 something%। रेलटेल डाउन ट्रेंडिंग है। PCBL न्यूलैंड एक्सटेंडेड है। सेटअप इज आई थिंक गुड, लेकिन एक्सटेंडेड है ये बहुत, कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंडेड है। दिस इज मतलब वही पैराबोलिक डाउन अपसाइड। वॉल्यूम्स वी कैन यू कैन सी बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, वी कैन जस्ट ट्रैक इट, लेकिन आई वुडंट रियली एंटर हियर। साइडर्स, Centric, PID, Jubilant Pharma, it has been in my watch list, लेकिन अजीब ही मूवर है ये, पता नहीं। I just don't like its movements. I was confused between Jubilant and Orchid Pharma, तो I went with Orchid क्योंकि इसके moves पता नहीं क्या है, ये अलग ही बहुत ही वॉलेटाइल कैंडल्स बनाता है। मतलब उसी ये जो विक्स है यहाँ पे सडन डाउन मूव दे दिया फिर ऊपर आ गया, तो थोड़ा बिहेवियर इसका अजीब सा है, इसलिए आई वेंट विद ऑर्चिड एंड ऑर्चिड परफॉर्म्ड वेल। पावर नेटवर्क, क्राफ्ट्समैन इज गुड। क्राफ्ट्समैन क्राफ्ट्समैन इज गुड, वही डाउन साइड कम होती जा रही है, बट आई वेट थोड़ा और एक और वो बनाई तो एक अच्छा 3T BCP हो जाएगा, तो देन वी कैन सी। अभी तो चलो एक बार आरती कर ही लेते हैं। राज मिंदा कॉर्प ऑफ माई इंडिया, सिंफनी में अच्छी अपसाइड है। इंडिया सीमेंट्स टाइप हो रहा है। इंडिया सीमेंट्स पहले भी आई डिडंट ट्रेड इट, लेकिन दिस वाज अ गुड सेटअप यहाँ पे। देन यहाँ पे कंटिन्यूएशन, if anyone wants to pyramid, then यहाँ पे, then again this is very tight यार। if we go in the lower time frame, even lower time frame पे भी this is very very tight, good setup। let's see वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स भी देखो बिल्कुल नेग्लिजिबल वॉल्यूम्स है यहाँ पे, तो वी कैन सी कि सप्लाई बिल्कुल ही खत्म सी हो रही है। पर वही है, वन थिंग इज एक्सटेंडेड है ये भी बहुत, तो देखना पड़ेगा। जीनस पावर ग्रेट सेटअप, लेकिन ब्रेकआउट दे गया आज। जीनस पावर बहुत ही अच्छा सेटअप, पर आई थिंक 5%, हाँ 5% सर्किट लिमिट है, तो दैट्स नॉट गुड। यहाँ पे एक अच्छा सेटअप था, यहाँ पे भी जीनस वाज अ ग्रेट सेटअप। रीटेस्ट करा वापस, इसको बेस ऑन बेस कहते हैं। दिस इज अ वेरी बुलिश थिंग, मतलब इट इंक्रीजेज योर कन्विक्शन बाय लॉट, कि ये एक बेस बनाया, ब्रेकआउट दिया, एंड उसी बेस के ऊपर इट इज मेकिंग अनदर बेस, तो दिस इज अ वेरी बुलिश साइन कि वो जो सप्लाई है यहाँ पे उसको बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा है। दिस वाज आल्सो इन ई-मुद्रा,
दिस वाज आल्सो इन ई मुद्रा ब्रेकआउट नहीं दे पाया, लेकिन इट वाज गुड। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बेस बनाया, एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बेस बनाया, लेकिन आई थिंक यहाँ पे सप्लाई ओवरवेल एंड द सेलर्स वन। बट अगर ये ब्रेकआउट देता तो इट वुड हैव बीन अ ग्रेट एक्सक्लूसिव अपसाइड। सी एट में इतना कुछ खास नहीं है। जी ई एल नॉट दैट गुड। GPPL, okay, GPPL looks good. GPPL looks good, लेकिन वो ये बहुत ज़्यादा zigzag movements है, so that is the only concern, but I like this कि यहाँ पे भी gap up, तीन candles tight अच्छी खासी, so that is good. Not sure, most probably avoid ही करूँगा, but देखते हैं। LT Foods, Metropolis, HG Infra, Network 18 is good। पर मीडिया स्टॉक्स पता नहीं क्यों बहुत ऐसे लेते हैं। मतलब आई ट्रेडेड इन मेनी मीडिया स्टॉक्स एंड the chances of hitting SL is too high either. बाकी this is a very nice setup. Look at these volumes. Red volumes में बिल्कुल दम नहीं है। We have this, यहाँ पे बिल्कुल अच्छी टाइटनेस है, तो बिल्कुल देख सकते हैं। गुड सेटअप। अरविंद, किसी को अगर पोजिशनल डार्गोस बॉक्स टाइप में इंटरेस्ट है तो definitely you can track. Also an uptrending kind of channel. ठीक है, not my kind of setup लेकिन decent है। बलराम चीनी, सारदा, एक्सरे, ITBC, Asian Orion, JM Financial, Vox, Tips Industries, Vijay looks good. Yeah, Vijay looks nice. The trend line you can make, and also the contraction wala part, 17%, then 13.5%, then यहाँ पे 7.4%, so good enough. Nice ECP. धानुका एग्रीटेक, नहीं, नहीं, not good. Star Cement, Epigrel, Orchid Pharma, TCI, DPL, Valent, Techno, Gabriel looks good. Yeah, Gabriel looks good. I think highs नहीं हो गई है। Yeah, हाइस पे एक अच्छा खासा बना रहा है, we'll see कि ये टाइट होता है या नहीं, उसके बाद या कुछ चेक। Shilpa, I'm still holding here. Shilpa is the biggest holding right now for me। दिस ट्रेंड लाइन पे बिल्कुल इस पे ही क्लोज दिया है, तो आई थिंक ये ब्रेक डाउन तो दे देगा। तो आई लेट्स सी, 656 अराउंड पे एसएल है, आई थिंक लेना ही पड़ेगा, देखते हैं। शो का ओके, टार्क इज वेरी नाइस। टार्क
यस, डार्क डार्क बहुत अच्छा है। दिस इज एन इनसाइड कैंडल फर्स्ट ऑफ ऑल, देन सेकंड एक अच्छा बेस है ना, थर्ड पॉइंट बिल्कुल ड्राइड वॉल्यूम्स, फोर्थ पॉइंट अच्छे खासे फास्ट accumulating volumes, fifth point uptrend, lot of good factors, great setup। और SL भी आई थिंक ज़्यादा नहीं रहेगा इसमें, यहाँ पे अराउंड एंट्री लें तो ओके ये ज़्यादा हो गया तो या 4% का तो SL रहेगा ही मिनिमम। ठीक है, इतना भी कम नहीं है आई वाज एक्सपेक्टिंग, पर ठीक है 4% है। IIFL सिक्योरिटीज, तो विक्स ज़्यादा है, दैट इज समथिंग आई डोंट लाइक। ठीक है decent है, this is symmetrical round, but I wouldn't trade it। Then TD power system is also good। Okay, TD power system is very good। वही highs पे it is forming this base। नहीं यार वही है, आई डोंट लाइक दीज सेटअप्स यार, मतलब दीज स्टॉक्स यार कि ऊपर जाएंगे फिर रिट रेस, फिर ऊपर गए फिर रिट रेस, ऊपर रिट रेस, ऊपर रिट रेस, मतलब बिल्कुल इट इज़ अ नाइटमेयर यार टू ट्रीट दिस। तो नहीं, सेटअप इज परफेक्टली गुड, और कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा और यहाँ पे टाइट हो तो इट इज गुड। लेकिन वही है, पास्ट बिहेवियर स्टॉक का चेक करना बहुत जरूरी है। गल्फ ऑयल, GHLC, बिलानी इन्वेस्टमेंट, मैजिका, रोसारी बायोटेक, आइनॉक्स ग्रीन ने अच्छा मूव दिया आज, बट एंट्री ये दे नहीं रहा था कहीं। आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स ट्विन बोथ आई वाज ट्रैकिंग, लेकिन कहीं एंट्री नहीं थी। Skipper, EMS Ltd we talked about, Greenfly, Greenfly is good, थोड़ा और टाइट हो यहाँ पे। अब ये विक्स भी आई डोंट लाइक, देखते हैं थोड़ा और टाइट हो यहाँ पे बस। Style, Sphinx, what is this, कुछ भी Sphinx performance I think, okay good one, again you can call this triangle VCP anything you like। Now candles are getting tight, volume dryness है, ठीक है good stuff। Optimus, Bombay Dyeing, EDDL, Zaggle is good। Zaggle if we have a look तो ट्रेंड अच्छा है एक तो, एंड यहाँ पे you can draw this resistance and let's wait थोड़ा, थोड़ा सा मतलब when the base is too big so you need some more these what do I say, मतलब ये डाउनसाइड वाली चीज़ है तो बड़े बेसिस पे सिर्फ एक उससे आई डोंट रियली लाइक इट। थोड़ा और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रेजिस्टेंस के नीचे, अच्छे से सप्लाई को एब्जॉर्ब करे एंड देन ब्रेक आउट दे तो दैट इज समथिंग आई लाइक। तो वेट करते हैं अभी। टाइम फोकस इज गुड लेकिन टाइम बहुत ले रहा है। टाइम फोकस अच्छा सेटअप है कि वापस इट केम बैक, लेकिन अगर यहीं से ही ब्रेकआउट देता तो आई वुड हैव एंटर। ये टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, एंड व्हेन टाइटनेस में जब स्टॉक ज़्यादा टाइम लेता है ना तो थोड़ा एक कन्विक्शन कम आता है कि इट मीन्स कि बायर्स में इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है अभी, है ना। दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट में आई वाज हेवीली इन्वेस्टेड हियर एट दिस पॉइंट यहाँ पे, है ना। ये was this one was the setup I think, है ना। I was heavily invested here, so it took a lot of time
है ना। एंड यार ये था या फिर ये था, मतलब आई थिंक ये था। हाँ आई डोंट नो, इनमें से कोई सा तो था, आई थिंक यही होगा, है ना। तो आई वॉज हेविली इन्वेस्टेड है, इट मूव्ड अप, लेकिन यहाँ पे आई टुक माई एसएल और फिर तो इट जस्ट वेंट क्रेजी। तो दिस इज समथिंग आई लर्न कि यार जब ज़्यादा टाइम लेना तो इट इज़ नॉट दैट वर्दी टू एंटर, है ना। सेम थिंग वॉज ईवोद्रा, जो अपन ने अभी बेस ऑन बेस की बात करी थी, कि ठीक है इट इज़ बुलिश बट बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इसका एक ये भी मतलब है कि फिर तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम बहुत लग रहा है। तो फिर मतलब नहीं है इतना वेट करने से, क्योंकि वी आर ऑल्सो मिसिंग अदर पोटेंशियल स्टॉक्स, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है उसमें। फ्लेक्स, पेनोरामा, कार्ट्रिज डिस्प्ले, नॉट दैट ग्रेट, आई डोंट लाइक दीज पिक्स। लेट्स सी, ज़्यादा कुछ खास नहीं। Aerocare, Shelly, Honda Power, Gensol, Pixar, RPG Life moved well. I'd shared with you all here यहाँ पे। I didn't trade it myself. मैंने और दूसरे stocks में लगाया था, GTT and also I didn't trade this, लेकिन बहुत ही अच्छा हो गया। You could have easily booked here, यहाँ पे above this high, and yeah, it was a beautiful move. Then uh, Thirumalai Chemical, Sequent, LPs, Urban Smart, SJS, Reflex, Morgan Labs. Good luck is forming a nice structure, लेकिन डाउन ट्रेंड में है आई थिंक। नहीं डाउन ट्रेंड तो नहीं है, अगर शॉर्ट टर्म में देखे तो ना तो वॉल्यूम्स अच्छे हैं, डाउन ट्रेंड भी है थोड़ा बहुत, तो आई डोंट लाइक इट। देन Cupid, TCPL packaging, nothing much. Pilatex, Daulat Algo. Daulat Algo is a beautiful base, and इसकी earnings भी if you would see तो पिछले 3-4 क्वार्टरों से the earnings are rising very nicely। ठीक है, it also gave a nice move today। I'm not entering क्योंकि अगर मैं कर भी लेता तो SL was too big for me। लगभग मतलब मिनिमम 6% का SL है यहाँ पे, तो not something that fits in my setup। अगर थोड़ा और टाइट होता तो आई वुड हैव टेकन एंट्री, बट देखते हैं। गोकर्णा, ज्योति स्ट्रक्चर्स, ज्योति स्ट्रक्चर्स का दिस सेटअप इज गुड। ज्योति स्ट्रक्चर्स वीकली पे अगर अपन देखें, वीकली पे आई ऑल्सो ट्रेडेड हेयर, लेकिन ये तो ऐसे ले गया था। ठीक है, if you are a positional trader तो you can have a look, एक बार फंडामेंटल्स भी चेक करके, and it looks decent। Para cables, Nippon Spinner, SMS Pharma, Canterbury, Canterbury, JB to be Camper। So yeah, Canterbury looks good।
अंडरवेल अपट्रेंड में भी है यहाँ पे, एंड ड्राइनेस भी है वॉल्यूम्स में। लेट्स सी, देखते हैं। हाईटेक, टीएच हेल्थ केयर, एमएसआईएल, एलिकॉन, एलिकॉन looks, एलिकॉन I'd like to wait. आई थिंक हाई स्पीड होगा ये भी। हम्म, ठीक है, अब अच्छा खासा ट्रेंड है, एंड यहाँ पे थोड़ा और टाइट होगा, तो या आई लव दिस। डीप इंडस्ट्रीज, अजीब कैंडल, काफी स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड कैंडल, और विक्स भी हैं, तो सुमित सिक्योरिटीज, आईजीपीएल looks good. IGPL looks nice. Whole contraction 12.5%. ओके, ये आई थिंक ज़्यादा हो गया रहेगा, हाँ। नहीं, क्योंकि डाउन साइड ऑलमोस्ट सिमिलर है, वी नीड कॉन्ट्रैक्टिंग डाउन साइड, तो नहीं, नॉट समथिंग। वन लॉस, GM ब्रूवरीज, PKC, DVL, DVL shot up again. DVL was a great trade. DVL we bought somewhere around here. 1 second. So DVL we bought here at this breakout, and we booked somewhere here. तो इसने retest करा and then it bounced again. है ना, अभी भी टाइट कैंडल्स बना रहा है, तो यस, समथिंग वी कैन डेफिनेटली ट्रैक। वीकली सेटअप, वीकली चार्ट में अगर अपन देखें, यस डाउनसाइड थी, यू कैन कॉल इट अ डाउन ट्रेंड इज वेल, लेकिन दिस इज अ रिवर्सल काइंड ऑफ सेटअप, राइट। यू कैन सी पास्ट वॉल्यूम्स, ये डाउन साइड में कुछ वॉल्यूम्स आए नहीं थे, है ना, यहाँ पे कैंडल्स अच्छी खासी टाइट हो रही थी, तो दिस इज अ वेरी नाइस सेटअप। फंडामेंटल्स नहीं देखे हैं मैंने, इसके फंडामेंटल्स देखूंगा एक बार। मैक पावर, पॉइंट सॉल्यूशंस, सिंकॉम, Max Industries, let's check it out. Max Industries is also good. We can make a resistance here, and yes, it looks good. यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है नहीं, पास्ट में एक अप ट्रेंड है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स हैं, तो यस, समथिंग वी कैन ट्रैक। बीटा ड्रग्स, NDR ऑटो, ओके, लॉट ऑफ इनसाइड कैंडल्स है। लगातार 3 इनसाइड कैंडल, लेकिन वी नीड समथिंग, मतलब आई डोंट, मतलब मैं सिर्फ इनसाइड कैंडल्स इज नॉट समथिंग आई टेल, आई नीड समथिंग एल्स विद इनसाइड कैंडल्स। So inside candles can be a +1 point for conviction, but not the entire reason to take a trade for me. Carnex, Carnex बिल्कुल, Carnex भी आई थिंक उसी में ही है, HBL पावर वाले उसमें ही है, कवच आई थिंक, नॉट श्योर। phase 3 looks nice. Okay, phase 3 looks very nice. हाँ, यहाँ पे बैम्बू कैंडल है, एंड पहले वॉल्यूम्स अच्छे हैं, अब वॉल्यूम्स ज़्यादा नहीं है, टाइट कंसोलिडेशन है थोड़ी, गुड सेटअप।
थोड़ा अभी और वी नीड टू वेट क्योंकि इसमें तो एसएल बड़ा हो जाएगा. Then Remus, STC India, Willis Finance, Kriti, Nahar Spinners, Power Sugar, DSL. This is looking good, लेकिन I don't like this. बहुत ही ज़्यादा downside. Wind Machines, RSWM, InShift Lab. Okay, good setup. यहाँ पे एक बेस है. बेस का ब्रेकआउट दिया बैम्बू कैंडल 20% है ना. एंड नाउ इट इज मेकिंग दिस काइंड ऑफ ब्लैक पैटर्न. नाइस. ये और दिक्कत है. एशियन टाइल्स, करियर पॉइंट, बिरला मनी, रत्नावीर. लिबर्टी शूज. आर एस सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर इज गुड लेकिन सर्किट्स हैं तो नॉट समथिंग विच इज ट्रेडेबल. नाहर इंडस्ट्रीज. नाहर इंडस्ट्रीज इज नाइस. अच्छी खासी टाइट कैंडल्स यहाँ पे. एक बार आप ट्रेंड और चेक कर लेते हैं. नहीं, ट्रेंड नहीं. स्टेज वन टाइप ऑफ स्टॉक है तो वो रिस्की रहेगा. लीव इट. अलंकित, पीवी सेलेक्ट, Kriti Nutrients, Asahi, ND Finance. This is also वही धुनसेरी वाला setup. Auto industries. Stage one वही. Stage one are good to trade, लेकिन those are very risky. और accuracy in them are not that good. और stage one वालों में थोड़ा SL भी ज़्यादा रखना पड़ता है. 3-4% का SL doesn't work in stage one stocks. अपसाइड पोटेंशियल भी अच्छा होता है बट यू हैव टू कीप अ लिटिल बिट हायर एसएल. 8-9% का तो एसएल चाहिए. साइबर टेक. ओके, अब आई थिंक ऑलमोस्ट सभी सर्किट वाले स्टॉक्स ही आ रहे हैं. कैपिटल. अब ऑलमोस्ट सारे सर्किट वाले स्टॉक्स. आई डोंट सी एनी बेसिस हियर. और आर्चिड प्लाई लुक्स गुड. आर्चिड प्लाई. ओके, आर्चिड प्लाई looks nice. Archid Ply is that similar to that क्या नाम था यार उसका, DWL आई थिंक. नहीं, DWL नहीं था. यार आई एम फॉरगेटिंग है. मैंने शेयर्ड इट लास्ट टाइम इन द लास्ट थ्रेड.
बहुत ही सिमिलर सेटअप है उसके. Let's see. Then ये भी वही स्टेज वन टाइप का JMA. And almost everyone is a circuit stock. ये Anik Industries. Anik Industries is good, लेकिन वही है, I don't think इसमें liquidity भी नहीं. बहुत ही कम liquidity. RE Drugs. PKT is good, लेकिन वही liquidity नहीं होगी इसमें. Yeah, next time I'll also I add on a filter of कुछ volume का I'll add on a filter. So these kind of stocks do not come up in this scanner. Mm, these are all crap kind of stocks. That's it. Okay. So we have scanned all the 954 stocks, and these are some ones. The 32, I think. I'll trim down the list. I'll see a few more criterias, किस पे conviction ज़्यादा है, किसका trend ज़्यादा अच्छा है, and all that. तो वो अपन देखेंगे ना, and I'll share the priority list. अगर if you have anything to say, anything you'd like to discuss, तो uh, कुछ hand raise का option है क्या इसमें? I don't know. So if you have something to speak, I can invite you, I think. नहीं तो फिर अपन सेशन क्लोज करते हैं. हाँ, यस सर, बोलिए. जय बजरंगबली Hello, सर. हेलो. can हाँ you hear me? हाँ, यस यस. Greetings, sir. Sir, I just joined the sessions. I don't know like what you explained, so can you please share the recording of the session if it's possible? Yeah, I'm recording the session. I'll upload it once. I think Telegram will give me the recording, so don't worry about that. I'll upload that. Okay, sir. And another question is like I purchased BDL, so can you tell me like if I need to average that or I still need to wait for the right opportunity? Which stock? Can you repeat? BDL. BDL, Bharat Dynamics. Yes, sir. Bharat Dynamics, I think earnings it gapped down today due to earnings, right? Yeah, it's like 15% nearly. What is your buying price? Sir, it's around 1,350 in the past, and today I think like I need to average, but I didn't do that. So I wait for like it will come down or not, but as the market open within maybe 2 to 3 minutes, it's 7 to 8% up. So I didn't get the chance to average it out. So that's what I'm asking. Like, do I need to wait or Oh, it's 6% down still in comparison of my average price? So should I wait or should I do it right now, like tomorrow morning? See, from a
swing perspective, if you would ask me, so I'll say it's downtrending. So um, I don't really support averaging down. See, averaging down should be for investors. See, if you have studied the company and you believe in its fundamentals and its growth story in the future, then of course I'm doing this for the long dips term, are, sir. yeah, so then long term, for long term, if you're asking, then of course you can add. I haven't studied the company, so I cannot advise you Oh, on that part. okay. But from a chart perspective, I'd say, uh, yeah, you can add it. You can see the weekly chart. It's still in a good trend. This is a not that harsh of a correction, not that big of volumes either. So, yeah, you can add, no Understand. problem about that. Sir, can you suggest me, like, I'm also thinking about investing in Ola Electric IPO. Like, I know it's not IPO right now, they already started, so it's 20% UC today. So should I take entry tomorrow in the morning, like at 20% UC or not? Ola Electric, see, I studied. I did not study entirely, but I had a look at its Gigafactory part. So there are a lot Hmm. of operational things that they are doing it wrong. See, the Gigafactory, they are claiming this is going to be one of the biggest EV factories and all that. But the problem is the scale that they want to achieve, they are not able to achieve it. It's still operating at like 40% capacity. So if you're not going to achieve that scale, then there's no point because only if you operate it Unrealistic at like, targets. sorry, It sounds like they're having unrealistic targets. yeah, kind of like that. Because see, if you will operate it at like 80 to 90%, then only you will be able to bring the production cost down and ultimately give discounts to the consumer, and then they'll be able to buy. But if your factory only is running at 30-40% capacity, first of all, it means that the demand is not that great. And second is that because you're not at scale, then your production cost will still remain high. So it doesn't make sense to spend that much acquiring that many assets to open this big of a factory. So I'm a little skeptical on Ola Electric. Okay, understand, sir. Like, I heard some newses and they're telling like you should avoid this because it's just a trap. So I didn't invest in the IPO, but like after seeing 43% right now, like it's trading above the IPO, Hmm. like whatever the price is, 74, 76. Right now it's around 100, 109. So I feel like maybe I did a mistake. I don't know. But right now, I don't think so. Like at this price, I should take entry. So that's why I'm asking you. Like any suggestion over this Yeah, chart? Like, look yeah, at that. I'm on the same boat. I also don't. I also posted it that I don't understand this upside. Market can do things that are out of rationality sometimes. It's So just a manipulation, sir, I guess. maybe, yeah, a high chance it is. We never know the entire thing beforehand. But see, the thing we can do is take good decisions. And I don't see that buying is a good decision right now. Okay, sir. What about like Exides and Amraja, like the battery stuff? Battery stuff is good. Raja is good. I Uh, am what invested in yeah. Excite, not in Amraja, because like Amraja, it's already having a like had a rally in the past nearby 1400, 1500. So I feel like Excite is better. Yeah, Like Excite is right good now as well. it's sideways. Uh, not sure about the valuation and all that, but yeah, Excite is good. Even if you have a look at We its are using weekly that chart. everywhere, sir, like in our vehicles and daily usage. That's why I feel Hmm. it's better. Yeah, yeah. Battery is going to have a good demand, and even on the charts, this is a nice support zone. So if we see it Suppose. bouncing back upside on the upside, we can, yeah, yeah, it looks good. Thanks, sir. Or like talking about the railway sector, yeah, everything is moving except Ircon. And I don't like, I personally don't like Ircon. I don't know why, because it's moved like super slowly. But Mm-hmm. I invested in RVNL, IRFC,
IREDA, but not in Ircon. Okay. Thinking to invest. Uh, not not something. Railway is not something in my circle of competence. Oh, you don't like railway I stuff? only did. No, I'm saying it's not under my circle of competence. I don't Oh, understand okay. the railway business That's at not all. your cup of tea. Yeah. Got you, sir. Okay, so that's only the things like you. I just want to say it for the recording, but I ask a lot of questions. So that's thank you, sir, for No, solving my problems. not a problem. Have a good night, sir. Take care. Yeah. Thank you, Save. Okay. Anyone else, or shall we wind up this session? Think no one is going to talk, so sir, you should end the session. And thanks for delivering this wonderful knowledge. No problem. No problem. Okay, everyone, have a good night. I'll see if I get the recording. I'll share it with you as soon as possible. Okay.